तो मैं the point that I was making and that Kushal and I want to talk about is कि हमारे देश में and इंडिया के बाहर कुछ इतने महान लोग हैं ना, जैसे ये मैडम को देख लीजिए, मौसमी मोहंती जी बोलती हैं बुरखा हमारा गुरूर है। भैया बुरखा गुरूर हो गया अब, ठीक है? तो औरतों को ये वो तंबू में मशहूर डालना गाना है ना, हाँ। ये तो बुरखा हमारा गुरूर है, टा टा Yeah. टा 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 टा। ये देखो, ये मैडम, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि दिस इज जो हुआ है अभी कर्नाटका में, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन एंड जिम क्रो के बिल्कुल बराबर है। इंडिया ऑफ 2020 लुक सिमिलर टू यूएस ऑफ 1960। मतलब बेचारा रूबी ब्रिजेस की भी बेइज्जती करी दो इसी बहाने। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव ये किधर है, ये रहा, ये देखो, ये दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट वंस, कुशल। As long as a heterosexual, upper class, elite man finds the choice of a woman in line with his idea of empowerment, he will call it a choice. As soon as it deviates from that definition, it agitates him and stops being a choice. Do Hashtag you know what the hijab bro. do you know what the amazing thing? Bring that up again. कोई explain कर दो ये मेरे को. नहीं, I want somebody bring to that explain it up because again. 1 second, yeah, Sham, bring that up. yeah. I want to tell you the funniest thing. श्याम अपनी फोटो को ये Do लेफ्ट you में कर देना। know? Do Yeah. you know? This edit wasn't written by Shekhar. अच्छा, who was it It was written by? written. It was written by a woman in the office. There you go. It was and apparently not even a upper caste person. हाँ, अच्छा, शाबाश. So yeah, I don't know why ये नीचे ऐसे क्यों जा रहा है. Might be a new thing, but we'll see. हाँ, ये वाला रखना श्याम, ये वाला अच्छा, I fixed it now. And my favorite, probably my favorite one is Harvard professor saying कि ये तो basically this is the same thing as apartheid. That's my absolute favorite one. इधर apartheid चल रहा है इधर. So and there's other opinions also of some people. There was one, obviously Malala ji ने हम लोगों को बोला था कि भाई लड़कियों को पढ़ने दो and all of that stuff. मलाला को वैसे कभी हलाला नहीं दिखता इंडिया में। मलाला को हलाला नहीं दिखता. मलाला बहुत बड़ी दलाला है. That's the problem. Malala is the biggest dalala. Malala is a Manchurian candidate basically. Manchurian candidate film देखी है? Of course, the original and the remake. Yeah, so if you've seen the Manchurian candidate, the candidate behaves like a normal person the whole time. Suddenly you say certain words to him और Manchurian candidate एकदम खड़ा हो जाता है, ready to kill whoever you want. मुगलोट पे दीन का सम्मान करो. So Malala ji is basically Manchurian candidate. उनको किसान धारवाड़ नहीं दिखते, उनको हलाला नहीं दिखता, उनको ट्रिपल तलाक नहीं दिखता, लेकिन एक बार कुछ हिजाब या कुछ बोल दो या मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है, she will stand up like the Manchurian candidate कि भाई नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है इंडिया में, please help India. And it brings me to another part of the discussion that I want to do before we do any memes, which is what I just said earlier, Kushal, कि ये जितने भी हमारे या तो हमारे देश के वेस्ट लिबरल्स हैं जिनसे इंडियंस को टू अ डिग्री एक एक्सेप्टेंस चाहिए, या फिर बाहर के या तो गोरे हैं या बाहर के इंडियन लिबरल्स हैं जिनसे इंडियंस को एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो जनरेशन ऑफ वोक्स हैं, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, either because of social media or because ये ऐसे ही है, इतने बड़े चुतिए हैं कि they might just cure Indians of this problem of seeking validation from the West. क्योंकि इंडियंस भी देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हमको एक्सेप्टेंस तो चाहिए, लेकिन क्या हमें इतने बड़े चूतियों से एक्सेप्टेंस चाहिए? नहीं, ये तो देखो ऐसा है, इसके ऊपर मैंने ट्विटर पे भी काफी लिखा था और मुझे ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेट करती है. इनफैक्ट मुझे अकेले को नहीं, आई थिंक अभिजीत उतना इक्वली फ्रस्ट्रेटेड है जितना मैं हूँ इस सब्जेक्ट पे. आई थिंक अभिजीत शेयर्स माय सेंटिमेंट्स ऑन दिस वन. इट इज अ डबल एज थिंग. एक तरफ है, देयर आर पीपल हु आर यूज्ड टू हैविंग अ से ऑन द डिस्कोर्स of what it is when it comes to information dissemination of understanding India. कि हमारे देश का जैसे बोलते हैं ना, what is India, उसका आंसर अगर कोई देने वाले ना, आज तक
बाहर वाले लोग थे, हम खुद नहीं थे। और Yes. हमारे अंदर से जो लोग जाते थे ना, वो असल में वही लोग होते थे, उनके अनॉइंटेड लोग होते थे। Yes. तो एक तरफ से ये था, और दूसरी तरफ से हमारी भी समस्या है कि हमको भी अपने बारे में एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं थी। Yeah. हमारे यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने आते थे वो बहुत उल जलूल किस्म के, अभी आप ट्विटर पे ही देख लो ना, लोग बकवास ज्यादा चेपते हैं, Yeah. सेंसिबल बातें कम करते हैं। इसीलिए जो अभिजीत ने आज जो लिखा, why it was the concerted attack on संजीव सान्याल and विक्रम संपत there, Yeah. Yeah. because ये लोग ने बोला अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अभी तो बोलने वाले आ गए, ये तो सिस्टमैटिकली articulate है बोलने वाले भाई. आ गए, Yeah. ये तो आर्टिकुलेट है, इनको तो अटैक करना पड़ेगा। तो ये अभिजीत ने इतना अच्छा लिखा, सबको जाके पढ़ना चाहिए वो। सो द पॉइंट इज दैट इट इज अ ट्विस्टेड थिंग। सी, आई वाज ऑलवेज मॉक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, Yeah. for always being that I don't need the approval of New York Times or Washington Post or anyone for that matter. I am not going to give them the authority, but that doesn't mean I'm going to become an idiot and have no sense of balance also. Yeah. But there is this genuine problem when it comes to the Indian discourse. Like, I got very irritated on the recent Joe Rogan episode. A person I'm actually fond of, Akash Yeah. Singh. So Akash goes there and just in a passing reference ki bro मैं तो कितना fair हूँ bro, देखो bro, और उसने चेप दिया वो मुनव्वर फारूकी का केस। मगर अगर कोई इंसान, if you were really fair, you would have actually made the case of how there is no free speech literally in India. There was never any semblance of free speech in India. If you would have made that case, I would have been the first one to actually cut a snippet out of it and put it on Twitter and say, this guy is right, listen to this guy. But Yes. it was not like that. It was made to be some sort of, a Muslim, anti-Muslim thing. Are Yes. there anti-Muslim people in India? Yes, there are anti-Hindu people in India too, yaar. Yes. So what are you going to do? What, do you have any data, anything to back whatever your claims are? Nothing. It's just faffing in the air. And Yeah. that's my problem with the entire discourse. And then you have people like Akash saying that I am anti-woke, and then you speak with a person like Jagmeet Singh, Yes. who is an open wokia, Yeah. and then you call a wokia from Canada to have commentary on what's happening in India. I'm sorry, Akash, I might like you as a comic, and I'm sure he must be a nice human being, and I'm sure about that. Yeah. But भाई यहाँ पे तो चुतियाप कर गया है। नहीं, और अगर आपको इतना कॉमेडी करना है, and if you want to, he put out this video where he was making according to him, he was making a very earnest effort to understand what's going on in India because it's the country of his forefathers and he's very emotionally connected to it. तो बहुत, मेरे भाई, कनेडियन को क्यों बुला रहा है? इंडियन को बुलाना। कनेडियन से क्यों पूछ रहा है इंडिया में क्या हो रहा है साले? मैं सऊदी अरेबिया के बारे में जानना चाहूंगा तो मैं साले पाकिस्तानी को थोड़ी बुलाऊंगा या किसी मंगोलियन को थोड़ी बुलाऊंगा पूछने के लिए। अब क्या अजीब अजीब साले लोग हैं दुनिया में। मैं बहुत बड़ा इंडियन हूं भाई, मैं समझना चाहता हूं इंडिया। You know there is that Marxist slogan, workers of the world unite. Yeah. This is literally Laudus of the world unite. of the world unite. विश्व लवडेश्वर पुरस्कार। ये जो विश्व लौड़ेश्वर है ना, ये कोई क्लिप करके जब राहुल गांधी विश्वेश्वरैया बोलने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर डाल दो। यूज दैट क्लिप एंड यू पुट ये अभिजीत का वॉइस उसके ऊपर डाल दो और अगले हफ्ते मीम शेयर करना। But what I was going to say कि a lot of these people, Kushal, sorry, I'll just get back to you 1 second. A lot of these people, ये जो Indian Americans हैं, particularly who are trying to make their way in the United States, वहाँ पे पैदा हुए हैं, वहीं पे बड़े हुए हैं. They're very American. They're fully Americanized. But whenever they're talking in like pop culture, explaining who they are or talking about themselves, they'll always talk about their Indianness. कि भाई, I'm so Indian. My dad is so Indian. मेरा ये इतना Indian है, मेरा वो इतना है. Everything about them, their entire personality revolves around how Indian they are. But इनको सालों को इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता. Surface level information भी इनको इंडिया के बारे में नहीं पता. So you build your entire brand, pretty much your entire identity around how Indian you are, but you don't have even surface level information about what the fuck is happening in India. ये किस तरह का identity है भाई? Then stop talking about सोचो ना, history of free speech in India. History of free speech in India. If you are the first thing, if you ever have a discussion on free speech in India, the two most fundamental damaging stories in India is the 1920s
Rangila Rasool Sita Ki Rasoi episode that led to the blasphemy law 295A. Yeah. And the second biggest damage done to India in terms of free speech is Nehru and the First Amendment. You try to narrate a story on the biggest podcast of the world in 5 minutes, and you just want to spin it around and showcase it as suddenly become worse. Yeah. I can literally do a statistical analysis, and I can't say God bless Anand Ranganathan because I don't think there is a God. So Darwin bless Anand Ranganathan. And Anand has Darwin done the biggest service. तो क्या हो गया? Darwin वो गियो। तो होएगा ना, उसकी मिट्टी ब्लेस करेगी। उसकी मिट्टी ब्लेस करेगी उसको, आनंद को। So आनंद ने जो वो थ्रेड बनाया ना, फ्री स्पीच इन इंडिया अंडर बीजेपी, अंडर कांग्रेस, वो बेस्ट है। देखो, लेजेंडरी थ्रेड है भाई वो। this channel and this show has been consistent on shitting and crying that there is no free speech in India. But India में free speech बीजेपी के अंडर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। इंडिया में फ्री स्पीच थी ही नहीं। करेक्ट। तो अगर तुमने प्रेजेंट करना है कि इंडिया में फ्री स्पीच नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर आपने प्रेजेंट करना है कि बीजेपी के अंडर कुछ हुआ है, नहीं, तो फिर उसने क्यों ब्रो, तेरा जो तन्मय भट्ट था जिसने वो पादरीज को सॉरी बोला, ब्रो, उसको क्यों नहीं तू लाया केस करके? तेरे को सिर्फ मुनव्वर फारूकी दिखा, कुछ नहीं, वही तो चर्च ने बुली करके सनल को भिजवा दिया फिनलैंड। चर्च ने बुली किया ना उसको, हिंदुओं तो नहीं किया ना। वो जो बैठा हुआ कौन सनल कौन? अरे वो जो एथीस्ट था, जो ये कर रहा था, मैं मॉक करता था रिलीजन को, तो चर्च ने उसके ऊपर इतने केस मारे, वो बेचारा भाग गया, इंडिया छोड़ के भाग गया। वो रैशनलिस्ट सोसाइटी जो भी वो चलाता है। सी, आई गॉट नो इश्यूज इफ I just want consistency, and you are on the biggest platform. Otherwise, don't. And you are supposed to be such a huge voice. You're trying to present yourself as such a representative of the diaspora, है ना? कि आपके in your special is completely geared around your Indian identity and how Indian you are and what is happening in India. One of the clips that I think, let me see if I can find it. Somebody had shared this clip on Reddit somewhere. By the way, his special was really funny, यार। मैं को तो आकाश सिंह का स्पेशल बहुत अच्छा लगा। वो Bring Back Apu, सब लोग देखो, बहुत actually Bring Back Apu part is fine. That was again, fun. That's what I'm saying, that your entire thing is built around but you are still making jokes about that fucking 15-20-year-old stereotype कि Indians के पास toilet नहीं है। Indians are all street shitters. जैसे, watch this one. Somebody shared this on Reddit. This was actually shared by Matchy Bex on. Yeah, it was shared by Matchy Bex on the. Yeah, magar we were street shitters na before Modi took over. So that is one of Modi's biggest legacies. Yeah. I know, but 2021 में भैया jokes इस बारे में मारे जा रहे हैं ना कि Indians कितने बड़े street shitters हैं। अरे उसने गलती से सैन फ्रांसिस्को में किसी को टट्टी करते देख लिया होगा। Can't access. They'd be like, okay, you know what you have that real Indians can't access? Toilets. This is funny though. There's a lot of folks, if you try to describe toilets, they would think it was actual magic. You'd be like, wait a minute, hold on. You doo-doo into a machine? Press a button. Doo-doo disappear? Yeah, so it kind of goes on in this vein for a little bit. It's funny. So first of all, no, I see. It's completely subjective. If you think it's funny, I have absolutely no issues with it because comedy is highly subjective. I just think कि आपको इतना अगर इंडियननेस चोदना है अपना, तो कम से कम थोड़ा सीख लो इंडिया के बारे में. That's all I say. चोदना है तो चोदो, लेकिन सीख लो, सीख कर चोदो. अनपढ़ जब चुदाई करते हैं, मेरे को वो पसंद नहीं आता. पढ़ के चोदो. ऑफिशियली वैसे तो दुनिया को बाथरूम में हगना तो इंडस वैली ने सिखाया होगा, क्योंकि इंडस वैली में सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम्स थे. कम से कम यार इतना इंडियन बनते हो कि यार forget these old stereotypes against Indians, bro. Apu is so liberated, bro. Apu to dekho is a business owner, bro. Forget about those old Hollywood Indians, bro. इतना ही अगर bro पेलना है, तो at least find out कि इंडिया में क्या चल रहा है ना टॉयलेट एक्सेस के बारे में. इतना तो सीख लो. नहीं हमको लेकिन अपने एंड्रू शूल्स के साथ शो बनाना है, हमको जो रोगन पर जाना है, तो जो रोगन पर जाके हम ये थोड़ी बोल सकते कि मोदी बड़ा अच्छा काम कर रहा है. वहां पे तो जाके हमको पेलना है कि नहीं इनको तो टट्टी करना भी नहीं आता, गांड धोना भी नहीं आता.
That's the kind of चुतियाब जो मेरे से सहा नहीं जाता है कि ठीक है आपको जोक मारना है मारो, but then don't stop building your entire identity about how much you love India, how much you know about India, and how Indian you are. Get the fuck out of here. Yeah, exactly. That's what I feel. That's just think what I feel. Russell That knows shit more about fucking India pisses than me off. Akash That's does all. in that sense. What? क्या कह रहे हो? I think Russell Peters is more accurate on about his assessment Yeah, of Russell India. Peters in his genuinely jokes in that loves sense. India. Genuinely प्यार है उसको इंडिया से. यार मैं एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता आकाश नफरत करता होगा इंडिया से. नहीं, No, नफरत he की बात नहीं है doesn't. ना. Genuinely point is- investment है इसका रसल पीटर्स का. आकाश सिंह का कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है. उसके स्टैंड अप से पता चल जाता है यार. The way he talks about India is very clear. There's no emotional investment. There's a connection. ठीक है, I can use that connection to make jokes. Great. But okay, to be fair, you don't need to have an emotional investment. Agreed. But you do have a duty of care to your viewers to research things properly and not talk shit. Yeah. शाम भाई चिल करो, मैं भी नाले में टटी कर रहा हूं. हमारी नाले में बैठा हुआ शाम भाई, रिलैक्स. भावुक मत हो. But yeah, I agree with what Abhijit is basically saying, that if your identity revolves around this one thing, learn about it. I think should be the bottom line